ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। सो धन्यवाद मैंने ऑनलाइन रे आस्थिबारु। प्रभुपाद लीलामृत आमे स्टडी करिबा। प्रभुपाद तांको लीला आमे जते आमे पढ़िबा एवं जते आमे अधिक जानिया को चेष्टा करिबा सेते आमेर भक्ति रे दृढ़ता आसीबो। प्रभुपाद लीला कहीं हमको दृढ़ दृढ़ करिबो भक्ति रे, कारण कृष्ण लीला रु आमे होप माने आमे जानी दबा जोटा श्रीमद बलदेव महाराज कहती बारंबार जे कृष्ण लीला रु आमे जानी परिबा जे एटा ठीक एटा भूल, किंतु जने भक्त लीला रु आमे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ता पाइबा से भक्त केमती प्रैक्टिकली एटा को करले। स्टार्ट कर आमे प्रभुपाद लीलामृत रे केती हम पढ़ी आमे जोटा एटा स्वरूप महाराज जोटा लिखछंती सेटा केती पढ़िथिले अर्थर सेटा हम स्टार्ट करू। Okay, आमे एटू पढ़िया आई थिंक एज अभय एज 56 रु ठीक। Abhay was 56 and he thought that he must now begin very seriously manifesting the orders of his spiritual master.
As he told one of the men in Jhansi, the whole world is waiting, Mr. Mitra, for spiritual revolution. Since his spiritual master's instructions, the institution, the Gaudiya Math, had become ineffectual due to fights and permanent factions, he attempted to start a movement of devotees with worldwide activities. Although he had only 1 or 2 active helpers, he obtained the use of an abandoned temple and began working toward what he envisioned as a kind of spiritual United Nations. He wrote a charter and legally registered his movement as the League of Devotees. तो जेतोळु प्रोपर 56 इयर्स रही जानती से समय रे से डिसाइड करंती जेबे सीरियसली करिवे यस गुड क्लास I'll talk you on phone. So तापरे जेतोळ as he told प्रोपर झांसी रे कहउछन जे समस्त जगत रे आध्यात्मिक आंदोलन पई जगी की रहिछन आउ ताको गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन मध्ये थिला जे केमती हमें प्रचार करिवा सब जाने किंतु एबे सेटा इनइफेक्टिव हो जाई छि पूरा तो सेत में अभय एबे डिसाइड करछंती जे किछि करियो नै तो प्रभुपाद चाहउछंती जे वर्ल्ड वाइड किछि हमें स्टार्ट करियो ऑल्दो प्रभुपाद की एते हेल्प करिया वाला नथिले हेले प्रभुपाद चाहले जे हम करियो प्रभुपाद गोटे पुराना मंदिर गोटे अबैंडन टेंपल सेटा नेले एवं सेथिरे से भाबिले जे एथिरे केमती हमें पूरा सारा जगत रे यूनाइट करियो जगत को केमती यूनाइट करियो तो से गोटे लॉ कोड चार्टर लिखिले एवं लीगली ताको रजिस्टर करले नाटा इस्कॉन नो से तो ना देथिले लीग ऑफ डिवोटीज एटा सब मन रखिया दरकार यार आउरी डिटेल्स रे बड़ लीलाम भितर अछि से लीग ऑफ डिवोटीज ता प्रथम रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन प्रभुपाद League of Devotees Jhansi Reda first established. But while absorbed in these affairs, one day I received a telegram that his business in Allahabad had been burglarized. His servants had stolen his money, medicine, and anything else of value. किंतु परे जाना पड़ला जे अभय टेलीग्राम रे पाइले जे ताको अल्लाहाबाद जे ता दुकान अछि तारो सेटा लूट ही जाईची एवं ताको निज चाकर माने ही सब चोरी करी नहीं छै किछि भी रखना पैसा मेडिसिन सब रखि छै सब नहीं पड़े छै on reading the news he was silent but then laughed and uttered the Bhagavatam words. Krishna's mercy was to crush the material success of the sincere devotee. When one of Abhay's Jhansi friends advised him to return to Allahabad, he replied, "No, this is good for me. First, I was sad to see this, but I can see one great attachment has come to an end, and my life is now fully surrendered and dedicated to Sri Sri Radha Krishna." तो ये भली तो जने सुधा भक्त ही भाई परियो जे प्रभुपाद कहउछन जे जहा मोर अटैचमेंट थिला जहा किछि भी थिला अल्लाहाबाद सहित बिजनेस सहित तो एबे सेटा मध्ये कृष्ण दूर कर देले बड अटैचमेंट मोर गोटे पळेला ए भली कहि सेबे कहउछन जे मोबे पूर्ण भाव रे शरण से श्लोकटा प्रभुपाद कर फेवरेट वर्स एक्चुअली प्रभुपाद बहुत कोट करती है जस्या हम अनु प्रेरणामि इस श्लोक ये देखो श्लोक श्री भगवान वाच जस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं सनै ततो धनं त्यजन्ति अस्य सजना दुःख दुःखिता एटी कोन कहउचंदी एटी कृष्ण कहउचंदी जहा पर मोर विशेष कृपा हो जदि मोर का ऊपर विशेष कृपा हो
ताले मु तार समस्त धन को हरण कर दिए एवं तत अधनम त्यजन्ति अस्य सजना दुख दुखिता बोचन जे सेतले एई भली अवस्था हबो जे तार रिलेटिव्स ता फ्रेंड्स ताकू अबैंडन कर देबे एई भली से एक्सटर्नली मेटेरियली केवल दुख ही भोग करियो तो प्रभुपाद से जिनसटा कहउछन जे एटा जो विशेष कृपा जैसे हम अनुग्रहण एटा जहां ऊपर विशेष कृपा हो ता सहित एंती हो सेटा एटी कहउछन तो से विशेष कृपाटा विशेष लोकों ऊपर ही हबो आम मानक ऊपर हबनी काहे कि ना हम माने रियली फॉलन ओके वहां पे ग्रीन डबे में on a visit to family in Calcutta Abhay made the final break from his family responsibilities. He still had a small business there and he had gone to try and raise funds for his missionary work in Jhansi. But inevitably, he was plunged again into family responsibilities. Some of his children were still unmarried, rent and bills had to be paid. Even if he were to develop his Calcutta medical shop, the family would demand whatever he earned. And even if he were to accede to his family's demands and live at home, the greatest difficulty would still remain they weren't serious about devotional service. तो सेतले कलकत्ता पुणी आउथरे प्रभात गले कारण अलाहाबाद रे से दुकान करथिले आ ता घर लोक मान को सब कलकत्ता रखछन तो अभय एबे पूरा पूरी भाबे रे ताको फैमिली जंजाल को बंद करले एवं हेले भी तांकर सेठी बिजनेस थिला किछिटा कलकत्ता रे चाइथले किछिटा रेज करिवे फंड ता पई माने का पई झांसी रो प्रोजेक्ट पई टोटल लीग ऑफ डिवोटीज हिच तो से सब चेष्टा कले प्रभात प्रथमे किंतु जदि सेटा चेष्टा करिया जिबे पुणी आउथरे फंड्स रेज करिया को झांसी पई तो बिजनेस संभालिया गले पुणी आउथरे तांकर फैमिली रिस्पांसिबिलिटी आसीजियो तो सेति पई प्रभात देखले जे एटा सब बड़ एबे बाधा है कि आसी पहुंची तांका बे आमे देखले ना प्रभात एज के 56 सेतडे है ना तो प्रभात कर किछि जण पिला ने बाहाई ना सेति पर्यंत बिल्स गुडा पे हेनी even if he were to develop his Calcutta medical shop family would demand whatever he earned है ना तो प्रभात चाहिले भी एबे तांको डिमांड जदी पूरा करिवे आ दुकान भी बढ़ाइबे तो एभली भाबरे he will accede to his family's demands and live at home तो प्रभात एटा केबे भी चाहिलेनी काहेकि because they were not serious about devotional service प्रभात और ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी कोन थिला घरे रहिबार ना से माने सीरियस नथले ता फैमिली से टाइप पे कहिबे केमते से सीरियस नथिले एटी कहिबे what was the use he thought if they would not become devotees his wife and relatives were not interested in his Jhansi preaching but wanted him to spend more time in business and family affairs his father-in-law complained why are you always talking about God but when friends came to visit Abhay continued preaching and speaking on Bhagavad Gita just as he had done in Jhansi and as before his wife and the rest of the family would take tea in a separate room Prabhupada would recall later I wanted as much as possible to get her work with me in spreading Krishna consciousness to get her help but she was very determined so finally after 30 years I could understand she would not be any assistance to me Prabhupada देखन प्रभात केते प्रभात एते बोल्ड डिसीजन नो छथि जे प्रभात डिसाइड करछन जे समान काई भक्त होई परिबे समान जमा एक्चुअली प्रीचिंग रे तो इंटरेस्टेड ही नथिले झांसी प्रीचिंग कोन तार कलकत्ता रे तो प्रभात प्राय जे तोल कलकत्ता आसंती तो कलकत्ता रे किछि आखपाख लोक डाकी की घरे भगवत गीता चर्चा करन जे झांसी रे करथिले तो आगो भली एथर भी समान ताको वाइफ आ बाकी फैमिली मेंबर माने कहले जे हम चा पीबू साइड रूम में बस चा पीबू तो तुम तोर चर्चा करता जेमती हो थाए आमाने और घर माने भी हम देखि छे किंतु आमाने कि स्टेप्स न ना हेले भी ताको निजर बोली भाबतो किंतु प्रभुपाद कहउछन जे ना दे आर नॉट मु ताको सेता रहि करबे माने प्रभुपाद कोनस कॉम्प्रोमाइज चाहनाती कृष्ण कॉन्शियसनेस
बेसिकली आमे से स्टेज ना हो तो आमे से बले एक्टिविटी डायरेक्टली करिया होता नहीं अंडर गाइडेंस ही करिया पड़ियो तो आई वांटेड एज मच एज पॉसिबल टू गेट हर प्रभुपाद चाहिए जिते पॉसिबल ताको केमती निज सहित ए कृष्ण चेतना आंदोलन रे लगेबे ता पिचिंग रे ताको हेल्प लेबे किंतु कोनोसी भाबरे से सपोर्ट पाइले एटा केमती आउट के आगुले कहबे Abhay always advised his wife not to drink tea. It was not the practice of a strict Vaishnava family. Finally, he said, "You have to choose between me or tea. Either the tea goes or I go." Abhay's wife replied jokingly, "Well, I have to give up my husband then." तो एवल भाबरे अभय अभय ताको वाइफ को बारंबार तो मना करछन्ती चा पिया को बारंबार मना करछन्ती है ना आ से कहउछन जे वैष्णव फैमिली आमे मते जानि छे जे कोनसी क्या इसको ले लो जी हां अजे तो प्रभुपाद कहिले जे डू यू वांट टू चूज टी और मी तो प्रभुपाद कहिले I choose Prabhupada तो नेता का वाइफ पूछती no I choose tea I have to leave my husband then एंती कहउछन तो एटा गोटे केते बड़ माने ताका वाइफ ए बड़ी गोटे करछन प्लस then one day she made a serious mistake आउट मिस्टेक कोन करछन she traded her husband's copy of Srimad Bhagavatam for tea biscuits when Abhay came home and looked for the sacred book she told him what had happened Abhay was shocked and the incident pushed him to leave his family for good. In a mood of stark determination, he left his family and business. तो इबल भाबरे प्रभुपाद and तांका वाइफ तांका चिल्ड्रन को नै कि सबल साथी जीव चलथिले चाहिथिले किंतु कोनोसी भाबरे ताकू तांको सपोर्ट मिलला नै सेते अभय बाध्य होई कि निज रास्ता अलगा करले तो एटा को कोनोसी अलगा भाबरे हम एटा बुझिबा कथा न एटा बुझिया रहले हमको से भली चेतना रे पहुंचले हमें बुझी परिबा जे प्रॉपर केते जण माने केते एक्सॉल्ट जे ए भली डिसाइड करि परछन तो जा भी हो एति के हम आज प्रॉपर को लीला विषय पढिबा आगु को हमें कंटिन्यू करिया एबे हमें प्रॉपर कर गोटे पास्ट टाइम प्लेस देखि I have to sound अच्छा हमें बर्थ प्लेस विजिट करथिले ना एडमिट करी कहले बर्थ प्लेस विजिट करथिले बोले ओके हां एटा विजिट करथिले करेक्ट ता पर हम नेक्स्ट एठी बर्थ प्लेस रे बहुत सुंदर भाव रे इंस्टॉलेशन ही छथि प्रभुपाद को अपीयरेंस डे म्यूजियम बर्थ प्लेस रोड म्यूजियम
ପଣସ ଗଛଟା ଅଛି ଜୟପ୍ରତାପ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଇ ପଣସ ଗଛର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆମେ ଲଗେଇଛୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବି ସାଇଡ୍ ତା ନାଁ ତାକୁ ସାକ୍ଷାତ Sakal is the name of the tree of Jnana. You see that he's Adesh, he's a special person who came from the spiritual world. So we see that he is an Avesh, a special person, came from the spiritual world. Lord Chaitanya predicted he would send some Senapati Bhakta Lord Chaitanya predicted that he would send some Senapati Bhakta and who would preach in the rest of the world. who would preach in the rest of the world. Lord Chaitanya said he preached in the Indian subcontinent, Lord Chaitanya said he will preach in the Indian subcontinent, and then the rest of the world was left for Srila Prabhupada. and then rest of the world was for Srila Prabhupada. And some people asked Srila Prabhupada, why didn't Lord Chaitanya deliver the whole world? Some people asked Srila Prabhupada, why didn't Lord Chaitanya deliver the whole world? He did, but he left the rest of the world for me to do. Said he did, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ କେତେ ଲୋକ ଯେ କାହିଁକି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଭଗବାନ ଯଦି ସାରା ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଲେ ତ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାରଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କରିବି ସେଇଟା but he left rest of the world for me to do. ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯିବା ଯେତେବେଳେ ନହେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ କେବେ ବି ଯିବା ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଲେଖା ହଉଛି କାଲକାଟା ଦ ବର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ So, but anyway, this is very important. These tirthas of Srila Prabhupada are so important. प्लेस ठीक पाखरे मदन टेंपल से कहबे बे मोटा पिलर्स एटा भी हमें the Prabhupada birthplace just walkable 100 just later. So we have come to another temple. Isn't it looking Vrindavan? As I said, there are hidden treasures in Calcutta. And Srila Prabhupada's birthplace, just near to Srila Prabhupada's birthplace. This is Toliganj and this is Radha Madan Mohan temple. Rajani Devi, Prabhupada's mother, she came to her elder sister's house to give birth to little Abhay. The same day when she came here to take darshan of Madan Mohanji, she had the labor pain. And then on 1st September of next day of Janmashtami, Srila Prabhupada took birth. After 6 days in Bengali tradition, there is called Soshti Pujo. After 6 days, the boy is being bought in a temple of Krishna and then he gets the blessing of the deities. So Prabhupada was being bought here in this temple in front of Radha Madan Mohanji and he got blessings. He got blessing and every one of us we know. And when the astrologer saw
little Abhay will become a great personality, will establish more Madan Mohan temples around the world. And this is the glory of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Prabhupada, when he became a householder person, he used to stay very near to this place, and he used to visit at that time also this beautiful place, this beautiful temple. Behalf of all of you in our Kolkata Yatra today, I am offering my sincere prayers that all of you can become more attached to the lotus feet of Radha Madan Mohan, Radha Gopinath, Radha Govind, and we can serve Sri Guru and Krishna at the lotus feet of Srila Prabhupada. And I also pray that offline you all come to these hidden treasures of Calcutta. You can visit and get the blessings of these beautiful deities, which has been specially worshipped and honored by Srila Prabhupada. Sri Sri Madha Madan Mohan Ji ki jai. Yeah, Madan Mohan temple. Who told it? 500 years old. प्रभुपादଙ୍କର ମାଙ୍କ ନାଁ ରଜନୀ ଦେବୀ। ରଜନୀ ଦେବୀଙ୍କ ମା ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀମଣି ଦେବୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀମଣି ଦେବୀ प्रभुपाद का जन्म। प्रभुपाद भी आते थे। प्रभुपाद की मम्मी पहली बार आई थी इनके घर में, बड़ी बहन के घर में, तो इधर पहले आई। उसके बाद प्रभुपाद जी का जन्म हुआ और सरस्वती पूजा के बाद प्रभुपाद को वो तो आज मदन मोहन टेम्पल में करते हैं। नेक्स्ट विल विजिट सम अदर प्लेस, फास्ट टाइम प्लेस। थैंक यू सबको ज्वाइन करने के लिए। निरुपमा माता जी और लोकनाथ प्रभु शायद हिंदी ही समझ पाएंगे, तो मुझे लगता है हिंदी में बोलूं। और हारामणि माता जी, प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण माता जी, बोलिए माता जी। हाँ दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी, टिके मु भाबिली आज क्लास टा हबनी बोली टिके देरी हे गेला, तो मु लेट रे जॉइन करली। अच्छा कोई बात नहीं, कोई चलेगा। हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे प्रमोद प्रभु भी थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।